Hello students, today I am going to talk on pyrimidine biosynthesis. Nucleotides can be synthesized by two ways. One is the de novo synthesis. De novo means producing new nucleotides from simple metabolic products combined together and producing a new nucleotide. That pathway is known as de novo pathway. डी नोवो पाथवे मतलब सिंपल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को आप इकट्ठा करके कंबाइन करके जो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं उस पाथवे को डी नोवो पाथवे कहते हैं. Salvage pathway means you recycle the free bases and nucleosides released from the degraded nucleic acid, that is a DNA and RNA, and you produce the nucleotide, that is you produce new nucleotide from these recycled free bases and nucleosides. That pathway is known as salvage pathway. Salvage pathway मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड होके जो फ्री बेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं उनको कंबाइन करके उसमें से न्यू न्यूक्लियोटाइड बनाने को salvage pathway कहते हैं. Both pure de novo synthesis and salvage pathway both can produce purines and pyrimidines. प्यूरिन्स मैंने डी नोवो और सैल्वेज पाथवे पहले ही समझा दिया है, पहले से एक वीडियो बनाया है. इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दूंगी, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके वो देख सकता है. ठीक है. टुडे आई विल बी गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट pyrimidine. Pyrimidine first produces UMP, that is uridine monophosphate. From that produces UTP, that is a triphosphate, and then from that it produces the CTP. UMP then produces the deoxy-UMP, and from that it produces the thymine triphosphate. Okay, so today I'll be talking only about pyrimidines. This is the structure of pyrimidine. So if you see the numbering, ये numbers यहाँ से करते हैं. We number it from here. So this becomes the N1 and it is clockwise. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये clockwise इसको number देते हैं. Cytosine is found in both DNA and RNA. Cytosine दोनों DNA RNA दोनों में पाया जाता है. And if you see the structure, it is 2-oxy and on 4 position it is amino. Cytosine is 2-oxy 4-amino. ठीक है, cytosine 2-oxy 4-amino है. While uracil it is 2,4-dioxy. Okay, uracil is 2,4-dioxy or uracil is found only in RNA. The difference in uracil and thymine is there is a methyl group on the 5th position. Otherwise, uracil and thymine are almost similar. That is, it has 2,4-dioxy. But the only difference is there is a methyl group. And thymine is found only in DNA. Thymine सिर्फ DNA में पाया जाता है और difference यह है कि 5th position पे methyl है और uracil is 2,4-dioxy. Now we'll see the de novo synthesis of pyrimidine. First, we will see how the pyrimidine rings are formed, which all the atoms combine together to form the pyrimidine. The N1, C4, C5 and C6 is from aspartate. Aspartate will give these positions. Okay? That is N1, C4, C5 and C6. C2 is given by carbon dioxide, while N3 is given from glutamine. Carbon dioxide and glutamine together combine and form carbamyl phosphate. So we can say carbamyl phosphate forms the C2 and N3. So you can see this is aspartate. So ये N1, C4, C5, C6 aspartate से आता है और C2 कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूटामिन N3 देगा. ये ग्लूटामिन और कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर दोनों मिला के कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. और दैट्स व्हाई वी से कि C2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, N3 is from glutamine. So now we will see the steps in the de novo pyrimidine biosynthesis. The first step is the formation of carbamyl phosphate. Glutamine transfers its amido nitrogen to carbon dioxide
to produce carbamyl phosphate. See, this is the carbamyl phosphate. This reaction, it requires, it's a ATP dependent, and the enzyme here is carbamyl phosphate synthetase 2, and you can short form it as CPS2. So if you, this is carbamyl phosphate. Carbamyl phosphate is activated by ATP and PRPP, and it is inhibited by its product, that is UTP. We'll see the regulation later on. Okay. Now, if you have seen, this is CPS2. So you must be wondering what is CPS1. So CPS1 is actually an enzyme in the urea cycle. So to produce urea synthesis, you require CPS1. CPS2, this is a cytoplasmic enzyme, while CPS1 is a mitochondrial enzyme. So CPS2 pyrimidine synthesis is required for pyrimidine synthesis, while CPS1 is for urea synthesis. The carbon dioxide, if you see here, is combines with glutamine. So the source of nitrogen is glutamine in pyrimidine, while the source of nitrogen for urea cycle is from ammonia. So carbon dioxide and ammonia combined together with the help of CPS1 produces carbamyl phosphate in urea cycle. So CPS1 is in urea cycle, but CPS2 is in pyrimidine synthesis. So CPS2, if आप अगर यहाँ देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूटामिन कंबाइन होके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ये एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। यहाँ पे 2 एटीपी चाहिए, और यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो ये CPS2 है। सो CPS1 कहाँ होता है? CPS1 यूरिया साइकिल में होता है। यूरिया साइकिल में भी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है, लेकिन वहां पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एमोनिया है। कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया कंबाइन होके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूटामिन कंबाइन होके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा। और ये जो CPS2 है ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, while जो यूरिया का जो CPS1 है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ठीक है। So now moving to the next step. Here aspartate, you see this is aspartate. Aspartate, this carbamyl phosphate condenseth with aspartic acid, and the enzyme required is aspartate transcarbamylase and produces carbamyl aspartic acid. So this carbamyl and this aspartic both condense, that is they combine together to form this. So if you see this 2 and 3, this was carbamyl. Here see, this 2 and 3 is carbamyl, while this whole is the aspartic acid. Here look here, this is the aspartic acid. So whole together combine and form the carbamyl aspartic acid, and this phosphate is released over here. So if you see carbamyl phosphate aspartate transcarbamyl से ये रिएक्शन aspartate transcarbamylase कैटेलाइज करेगा, और कार्बोमाइल फॉस्फेट अस्पार्टिक एसिड के साथ कंबाइन होके कार्बोमाइल अस्पार्टिक एसिड बनेगा। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये 2 and 3 यहाँ पे है, दिख रहा है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट का है, और ये जो बाकी है ये पूरा अस्पार्टिक एसिड है। सो ये पूरा एस्पार्टिक एसिड है 1, 6, 5 और 4। सो ये दोनों कंबाइन होके कार्बोमाइल एस्पार्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है। सो ये दोनों कार्बोमाइल फॉस्फेट से और ये पूरा एस्पार्टिक एसिड से। ठीक है। सो हम अब विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपने देखा होगा ये
पूरा pyrimidine है, complete है, बस यहाँ पे join नहीं है. So with the help of dihydrouretase and with the removal of water, the pyrimidine ring is complete. So there is, see this CN4, so the ring is complete and it forms dihydrouretic acid. तो आपने देखा ये जो है ये वाला पोजीशन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ये फ्री है, तो डाइहाइड्रोउरेटेस उसको सील करके pyrimidine रिंग को क्लोज करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ अ रिमूवल ऑफ वाटर, और ये बनाएगा डाइहाइड्रोउरेटिक एसिड. ठीक है. अब now you have to see this three enzyme, that is CPS2, aspartate transcarbamylase and dihydrouretase. All the three enzymes is a multifunctional enzyme. They all are encoded by a single gene. Okay, so these three together forms a one single polypeptide. It is synthesized encoded by a single gene. Now to the next step. Here, this is a NAD dependent dehydrogenase. Here, if you see on here, this fifth and sixth position, hydrogen atoms are removed with the help of dihydrouretate dehydrogenase and produces urotic acid. Urotic acid, or it is also known as urotate. So can you see here that there is a double bond on this position 5 and 6. The hydrogen is removed in the form of NADH plus H plus. Urotic acid or urotate is then ribosylated with the help of PRPP into the mononucleotide orotidine monophosphate, or it is also known as orotidylic acid. OMP is also the short form. You can write it as OMP also. Here the enzyme orotate phosphoribosyl transferase is required, and if you see PRPP, so it will give is ribose to orotic acid to form orotidine monophosphate. Now, if you remember this PRPP in the purine synthesis, PRPP is from ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate in presence of ATP and the enzyme PRPP synthetase forms PRPP. This PRPP is common for purines and pyrimidine. So this PRPP will give its phosphoribosyl to orotic acid and then it forms the orotidine monophosphate. अगर आपने ये PRPP प्यूरिन्स में भी सेम PRPP यूज होगा. इफ यू रिमेम्बर PRPP बनता कैसे है, राइबोस 5-फॉस्फेट ATP के साथ कैटलाइज PRPP सिंथेटेज एंजाइम से PRPP बनेगा. ये जो PRPP प्यूरिन में भी सेम वही PRPP, यहाँ पे भी दोनों सेम है. तो ये जो PRPP है वो अपना राइबोस ओरोटिडिक एसिड को देगा और इट फॉर्म्स ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट. इफ यू अगर आप यहाँ ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि पिरामिडिन में यहाँ यू रिक्वायर लेटर ऑन, लेकिन प्यूरिन में आपको पहले से ही PRPP के ऊपर पूरा प्यूरिन रिंग बनता है ना. सो इन प्यूरिन the purines are built upon the pre-existing ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate on the ribose 5-phosphate, the purine rings were produced, while in pyrimidine ring, here first the pyrimidine rings are produced and then the ribose 5-phosphate is joined or combined. Okay, so that is the difference between purines and pyrimidines. So now we'll go to the next step. OMP decarboxylase helps in decarboxylation, that is removal of carbon dioxide from OMP to produce uridine monophosphate. So if you see in the structure, there was a C double bond O. This carbon dioxide was removed from OMP and it forms uridine monophosphate. Uridine monophosphate is the first pyrimidine synthesize. Okay.
Now, from uridine monophosphate, if we add a ATP in presence of ATP and UMP kinase, here or UMP kinase you can also name it as nucleoside monophosphate kinase. It phosphorylates UMP to uridine monophosphate. So UMP को phosphorylate करेंगे in presence of UMP kinase, तो एक ATP अपना फॉस्फेट देगा और इट प्रोड्यूसेस यूरिडिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले 1 फॉस्फेट था, ठीक है। सो नाउ इट हैज 2 फॉस्फेट, सो दिस इज नोन एज यूरिडिन डाइफॉस्फेट। सो नाउ वी विल सी यूरिडिन diphosphate, then again with the phosphorylation by ATP dependent kinase forms UTP, that is uridine triphosphate. Here the enzyme required is UDP kinase, or it is also known as nucleoside diphosphate kinase. Okay, and then UTP, then glutamine gives its amino group to UTP to form cytidine triphosphate in presence of enzyme CTP synthase. So amino group is given from glutamine and it forms 2-oxy 4-amino, that is cytidine triphosphate. You can see there is 3 phosphate over here. So it is 2-oxy 4-amino, while here in the uridine it is 2-oxy and 4-oxy. So it is 2,4-dioxy, that is uridine triphosphate, while cytidine it is amino. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो UMP फॉस्फेट बाइंड होके UDP बनेगा। फर्दर एक और फॉस्फोराइलेशन ATP से और एंजाइम होगा यहाँ पे UDP काइनेज और वो बनाएगा यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। फिर ग्लूटामिन अपना एमिनो ग्रुप देगा और एंजाइम होगा CTP सिंथेज और बनाएगा साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो साइटिडिन में 2-ऑक्सी है, 4-एमिनो है, while यूरिडिन में 2,4-डाइऑक्सी है। सो यूरिडिन एंड दिस इज साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नाउ लाइक प्यूरिन्स, pyrimidines also there is conversion of ribonucleotide diphosphate into its corresponding deoxy form, and it is activated by the enzyme ribonucleotide reductase. Ribonucleotide reductase converts UDP into deoxy UDP, and here required over here is thioredoxin. This is a thioredoxin dependent reaction. सो आपने यहाँ देखा कि यूडीपी जैसे प्यूरिन में भी ये हो, यूडीपी कन्वर्ट होगा डीऑक्सी यूडीपी में और वहां पे एंजाइम रिक्वायर्ड है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, वो यूडीपी न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी में कन्वर्ट करेगा। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम चाहिए और कोफैक्टर थायोरेडॉक्सिन चाहिए। सो इट प्रोड्यूसेस द डीऑक्सी यूडीपी। डीऑक्सी यूडीपी then with the removal of a phosphate forms deoxy UMP. एक phosphate remove करने से deoxy UMP बनेगा। फिर thymidylate synthase enzyme, in presence of thymidylate synthase enzyme, it helps in transfer of a methyl group from N5N10 methylene tetrahydrofolate to produce deoxy or thymidine monophosphate. तो आपने यहाँ देखा कि डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट बाद में मीथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा थाइमिडाइलेट सिंथेज। N5N10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट्स में से मीथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा और डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट बाद में थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो थाइमिडिन 2,4-डाइऑक्सी और यहाँ पे 5th पोजीशन पे मीथाइल है, while यूरिडिन में 2,4-डाइऑक्सी था।
तो यूरेसिल और थाइमिन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 5th पोजीशन पे मीथाइल है. So this is thymidine monophosphate. It has 2,4-dioxy. On the 5th position, it is having a methyl group. So only difference between uracil and thymine is that on the 5th position there is a methyl group. So it forms 2,4-dioxy methyl thymidine monophosphate. So that was about the de novo synthesis of pyrimidine nucleotide. So now we will see the regulations of de novo synthesis of pyrimidine nucleotide. So if you just have a look, carbon dioxide plus glutamine and ATP, in presence of enzyme CPS2, it produces carbamyl phosphate. Carbamyl phosphate, then in presence of aspartate, transcarbamylase produces carbamyl aspartate, and then a series of reaction, it produces UMP, then UTP, and finally then CTP. So in prokaryotes, aspartate transcarbamylase is allosterically inhibited by CTP, while in mammalian cells, CPS2 is activated by PRPP and ATP, while aspartate transcarbamylase is activated by ATP. UTP inhibits CPS2. UTP inhibits CPS2, while CTP inhibits aspartate transcarbamylase. So आपने यहाँ देखा कि PRPP ATP CPS2 को एक्टिवेट करेगा और UTP CPS2 को इनहिबिट करेगा. ये फीडबैक रेगुलेशन है. और CTP एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज को इनहिबिट करेगा और ATP उसको एक्टिवेट करेगा. ठीक है. In eukaryotes, the first three enzymes है CPS2, aspartate transcarbamylase, and dihydrouretase. These three are referred to as CAD. CAD means the first. If you take the first alphabet, that is C, A, and D. And the last two enzymes, orotate phosphoribosyl transferase and OMP decarboxylase, are also present as a single functional enzyme. These three were the multifunctional enzyme. The other two are the single functional enzyme. Because of this clustering of enzyme, the enzymes, the synthesis is well coordinated. Both complexes are cytosolic. The remaining enzyme, dihydrouretate dehydrogenase, is a mitochondrial enzyme. There is a well coordinated and regulated control for purines and pyrimidine synthesis. As it is obvious from the mole to mole, purine and pyrimidine ratio at the cellular level. The enzyme PRPP synthetase, the first reaction in purine synthesis, and it is which is responsible for the PRPP synthesis. It is also needed for purine and pyrimidine formation, is feedback inhibited by both purine and pyrimidine nucleotides. PRPP synthase is a key regulator step for both. So that was about the regulation of de novo synthesis. Okay. Now the inhibition of pyrimidine, the enzyme thymidylate synthase requires tetrahydrofolate derivatives. This reaction is inhibited by methotrexate, and so it serves as a good anti-cancer drug. So that was about the regulation and inhibition of the de novo synthesis of pyrimidine nucleotides. So please like my video and do subscribe my channel. Those who haven't subscribed, please do subscribe my channel. I have put a descriptive a link for the descriptive answer below this video. So please be free to download that.
And my next video, I'll be I will be talking about the disorders of pyrimidine and also about the salvage pathway. Okay, thank you. That's it.